गाइस, कैसे हो? आज मैं आई हूँ बैंगलोर में और काफी ओजी क्रिएटर फ्रॉम हाय हाय बैंगलोर ओजी इन्फ्लुएंसर फ्रॉम बैंगलोर से आज हम मिलने वाले हैं। वेलकम ईशान शर्मा। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो ईशान, मुझे ये बताओ, गोवा बीच पे लानी सारे बीचेस छोड़ के कैमरा खोल के कंटेंट बनाने का कैसे आइडिया आया? ये आइडिया मेरे को तब आया जब आई वेंट फॉर अ हैकाथॉन इन माय कॉलेज। राइट, तो मुझे कॉलेज में हैकाथॉन होते हैं, इसलिए का 24 आवर इवेंट। आप जाते हो, आपको 24 आवर्स में कुछ क्रिएट करके पिच करना होता है कि मैंने ये कोड से ये मैंने बनाया प्लेटफॉर्म, ये सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे इस तरह से लोग हेल्प मिल सकती है लोगों को। तो मैंने वही किया। आई मेड समथिंग विद माई फ्रेंड, माई रूममेट सारांश। बट जब हम उसको पिच करने गए, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ जज, राइट। एंड मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मतलब ज्यादा लोग थे नहीं, यहाँ पे 10 लोग खड़े थे सामने, and I was on the stage and I had to speak कि how can this help you? I was not able to sell the thing that I built in the last 24 hours, right? I was not able to explain everything and the USP of it. And when I went back to my hostel room, I was laying down on my bed and I was like कि मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, I can be a great engineer, but if I'm not able to explain what I have just built, if I cannot sell something to you, what is the point of me learning to code? मैं कुछ बना लूंगा, but I cannot even sell it to someone. Right, so what is the point of it? So I realized that I need to improve my communication skills at that point. So वहीं से start हुआ. I realized I don't have any friends in college because I wasn't socializing enough. I was only talking to my seniors in college, right? So my friends were my seniors. I did not used to hang out with my own batchmates. ओ, ऐसा क्यों? ऐसी पता नहीं, I just thought that it is better to learn and make friends from people who are older than me. ओके, तो So I get that wisdom from them, and then I use it in my own life and I make less mistakes in college. फुल लर्निंग मोड था, मतलब लर्निंग मोड फर्स्ट वाला ईयर ऑन से। था, एकदम ऐसे एकदम। काफी डेडिकेशन हो गया यार। ये तो फर्स्ट ईयर में लोग जनरली क्या बोलते हैं कि बिट्स क्लियर हो गया है, गोवा आए हैं, चिल गोवा वाले मारते हैं, बीच पे यहाँ जाते हैं। बट ये तो काफी डेडिकेटेड थे यार पहले से। इम्पोर्टेंट था, मतलब बिकॉज आई वॉज रियलाइजिंग कि माई पेरेंट्स आर पेइंग अ लॉट ऑफ फीस, राइट। सो आई माइट एज वेल यूटिलाइज इट टू द बेस्ट एंड मेक श्योर दैट आई कैन stand on my own legs and I can take care of them and myself as well as soon as possible. Very important. अमेजिंग। बट सो बेसिकली जो पहला वीडियो शूट किया, ये सोच के नहीं किया कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा? नहीं नहीं, इट वॉज जस्ट फ्रॉम दैट फीलिंग कि यार मेरे को कुछ अच्छा थोड़ा बोलना सीखना है, उनको इम्प्रूव करना है कम्युनिकेशन स्किल। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि मेरे कॉलेज में बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। जैसे देयर वाज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन माय कॉलेज हु वेंट फॉर अ 6 month long internship in Harvard, which was paid for by Harvard, and Harvard was also giving an internship stipend to him, right? So now if you imagine as a student in first year, you would never imagine that is something even possible, right? So people have these boundaries around them कि मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। I thought why not create awareness about these things that people are doing in second year, third year, fourth year of college at 18, 19, 20 age, so that others can also take this inspiration कि अच्छा ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, सो डू right? यू रिमेम्बर दैट फर्स्ट वीडियो? क्या बात की थी उस वीडियो में? वो फर्स्ट वीडियो मैंने बात करी थी उन्हीं से ही, जो शरद चितलांगे करके हैं। तो आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट हाउ ही क्लियर्ड जीसॉक एंड हाउ ही वेंट फॉर अ हार्वर्ड इंटर्नशिप। दैट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो। इट्स ऑनलाइन? इट्स स्टिल आउट देयर। ओह, देखना पड़ेगा। तो इट वाज अ ऑडियो पॉडकास्ट एक्चुअली। तो वहाँ पे एक फोटो लगी हुई है और पीछे कुछ बातें चल रही हैं। तो पहले आई थॉट कि आई विल डू अ पॉडकास्ट, राइट, बिकॉज पहले मेरे को पॉडकास्ट का कीड़ा था, स्पॉटिफाई पे भी डालेंगे पॉडकास्ट, सब लोग सुनेंगे एंड आई विल बी अ स्टार। बट देन आई रियलाइज्ड स्टार का कहीं ना कहीं मोटिवेशन था। स्टार तो नहीं था, बट इट वाज जस्ट दैट कि आई कैन स्प्रेड अवेयरनेस एंड थ्रू अबाउट दैट एंड जो भी होगा, मतलब आई डिड नॉट रियली थिंक दैट फार कि वो क्या होगा, उससे क्या होगा। बट देन पैंडेमिक हैपेंड एंड आई केम बैक टू माय हाउस एंड आई डबल डाउन ऑन एवरीथिंग। काफी सही यार। पर व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस इज क्योंकि अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को ये जो करियर ऑप्शन है, कंटेंट क्रिएटर स्लैश इन्फ्लुएंसर, दे स्टार्ट ऑफ विद एन एक्सपेक्टेशन कि हम स्टार बनेंगे, हम इसीलिए शुरू करते हैं। सो डू यू थिंक दैट्स द राइट मोटिवेशन? I don't know, because look, I'll tell you, I was watching Aman Dattarwal live when he was hitting a million subscribers on his YouTube channel, right? And he was super motivated and excited. जैसे ही वो 1 million hit हुआ, I was watching him live and I literally typed that shout out Ishan please Aman and he said Ishan bhai thank you so much. फैनबॉय मोमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। Now I look back, I'm like कि भाई क्या cringe बंदा था। तो
I was watching the impact that he has created through his videos, right? मतलब बच्चों को चीजें समझ में आ रही कि अच्छा कोडिंग ऐसे सीख सकते हैं, राइट? अगर हमको आईआईटी नहीं मिला तो भी हम कुछ कर सकते हैं. That is what he was spreading awareness about. So I thought if I can do something like that, मुझे कितना satisfaction मिलेगा अंदर से, right? So it was, you can call it FOMO, but I call it to get inspired from someone, right? कि अच्छा अगर इस बंदे ने इतनी बड़ी community बनाई, इतना impact किया, तो I can also do something similar. And if I do that, how cool would it be, right? Yeah. So it was like that. I would call it. आजकल a lot of people are watching videos, you know, like how much do influencers make and all. That is a good inspiration. But again, if you start with just that thing कि मुझे पैसे कमाने as an influencer, you won't last as long, because starting के एक साल I made zero money. Starting का एक साल I did not know how to make money on YouTube. I was purely focusing on sharing my learnings, on interviewing people on my channel. And I think that is really important, because that taught me the importance of putting in the work when you don't hear the claps. Yeah. Right? When you do not see the views, when you do not see the comments, if you are still able to go and deliver a video and keep doing it, showing up every single day, that is what will build that character. Because now I know कि अगर वापस चैनल नीचे चला जाता है by anything happening, I can still get everything back up, because I have that confidence. मैंने पहले उठाया तो मैं वापस कर सकता हूँ. So I think that is very important. सही है. फिर जब तुम बोलते हो कि बहुत सारे वीडियोस शूट किए, डिड यू हैव अ नीश इन माइंड पहले से कि यू आर जस्ट शेयरिंग योर लर्निंग्स? क्योंकि बहुत लोगों का अभी क्वेश्चन होता है कि स्टार्ट करना है, कैमरा स्किल्स भी है, बहुत शेयर करने लायक भी है, बट हाउ डू आई चूज माई नीश? नीश में मुझे ऐसा लगता है कि for me particularly, I did not have experiences, right? Like Ishan at 18 versus Mayuri today. Mayuri would have a lot more experiences to share. कि अच्छा मैं यहाँ गई थी, मैंने ये try किया था, मैंने ये किया. I did not have anything like that, right? I knew that I can share what I did in the last week, what I did in the last month, and what opportunities I got. But even more than that, I can bring people on my platform and I can share their journeys. Abhi recently I did a podcast with Anik Jain, who is a designer. Right now, Anik did not have the ability to get access to 2 lakh people on a single video, right? So I thought, let me bring him on my channel and let me share his journey to people, right? Because at the end, I want to spread more information and value to my audience. I did the podcast with him. ये 4-5 दिन हुए हैं. It is at 200K something views, right? So that one worked very well, because he had that substance in him. He had that story in him that people would love to hear, and I was just a platform through which he could reach out and people could get value from. But then this is when, fast forward to 2 to 3 years of content creation, कितने साल हुए स्टार्ट करने? 3 साल हो गए. After 3 years, you are sitting at a capacity जहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो. But imagine अभी कोई व्यूअर अभी शुरू कर रहा है, 0 सब्सक्राइबर्स, 0 प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस. हाउ डू दे डिसाइड देयर निश? I think आपको देखना पड़ेगा कि आपकी skills क्या हैं and what do you want to be known for. Do you want to be a value creator? Do you want to be a lifestyle creator? Value creator is someone who talks about something that can bring some sort of a value to your life. आप कुछ सीख सकते हो या फिर आप इंस्पायर हो सकते हो. जो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर होता है, दैट इज मोर एज अ फ्रेंड. जैसे people in India are quite lonely these days, especially the Gen Z, right? And if they see someone 18, 19, 20 sharing his or her life, they would love to watch that. And that's what we've been seeing with a lot of Gen Z creators, right? Agastya is one, Tarini is one. All of these people are creating and documenting their life. This is what I'm doing, this is where I'm going. And their life, people look up to their life. जैसे when Agastya showed that he was on the billboard in Mumbai, right? So everyone got motivated and inspired. I was like, सबका सपना होता है, right? Yes. ऐसे एकदम board पे, even everyone would want to be featured. Absolutely. I think couple of years back ये बस celebrity या Bollywood side होता था, but अभी creator economy इतना grow हो रही है कि normal person can dream of something this huge. Absolutely. So I think you have to decide that what do you want to be. जैसे फॉर एग्जाम्पल हरीश इन द स्टार्टिंग वाज जस्ट डॉक्यूमेंटिंग हिज लाइफ कि अच्छा आज मैं यहाँ गया, आज मैंने ये किया, दिस इज व्हाट द मेस ऑफ बिट्स गोवा लुक्स लाइक, दिस इज व्हाट द प्लेग्राउंड लुक्स लाइक, एंड दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग, इतने को इतने मार्क्स आए ऐसा. एंड देन ही गॉट इनटू फ्रीलांसिंग एंड ऑल दैट. आई थॉट दैट आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ बिट्स वाले भैया. क्यों? I didn't want to, you know, latch on to a brand.
Oh, in the okay. starting, because when that brand is not present, like for example right now, Hmm. then the whole thing goes away, right? So for example, बहुत सारे creators हैं जो IITs का नाम use करते हैं, right? They get into IIT and everything in their video is about IIT, IIT, right? IIT placements, IIT girls hostel, IIT this that or the other thing, right? So it's all about IIT and around that. बहुत भी आता है. आता है हाँ. IIT is again a very aspirational space. तो But लोग once they देखते हैं. graduate, what happens then? Learnings. Learnings कर देंगे, but again they don't have the same thing, right? हाँ. They are not 18, 19 again. They cannot be 18, 19. They cannot be in the same hostel to keep making the same videos that can get the views. So what do they do then? बट मेरा यहाँ पर एक व्यू है, आपको क्या लगता है? आई वुड लाइक टू लर्न योर टेक ऑन दिस. जो आप नर्चर करते हो आपको आपकी कम्युनिटी, लेट्स से आपका टीजी क्या है अभी, टारगेट ग्रुप 18 टू 18 to 24. 18 टू 24. तो लेट्स से मैं 18 ईयर की मयूरी हूँ, कॉलेज में आपके वीडियोस देख रही हूँ, 3-4 साल देखे, आई एम 24 एंड नाउ लेट्स से योर कंटेंट इज नॉट very aligned with what I would want in my life. That's a choice that the creator has to make. Do you evolve with the with Yes, your content, or do you that's stay the coming. same? For example, let's take an example of two creators, right? We have Aman Dattarwal and then we have Bia Biceps. Now, Bia Biceps is someone who started with fitness and fashion content. He then went into podcasts, and right now he's doing vlogs as well, and he's trying to evolve. कि आगे क्या क्या कर सकते हैं? What new can be done, right? So that was him. Then we have Aman Dattarwal. Now, Aman has been making videos around the 12th board, JE, 10th, ये जो रहता है, right? This audience forever, right from 2016-17 to this point. Both work, right? It's just that you have to make that choice, that do you want to evolve with it. I would want to evolve because मुझे लगता है कि I want some novelty in my content that I create today. Like my content, my video today and my video 2 years, there has to be a huge difference in the learnings that I have, in what I'm speaking, in the insights that I'm sharing with people. So I think evolving with the content and with the audience is important for me particularly. But it's a personal choice that everyone has to make. सो यू सी कि आपके आगे चलते हुए आपका टारगेट ऑडियंस का एज एवरेज बढ़ता जाएगा. Exactly. That will happen because I made that choice that I will grow with them, right? And then you can also make a choice कि नहीं मेरे को यही बनाना है content. I want to stick to this audience. आएंगे 2-3 साल कॉलेज वाले लोग, फिर चले जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर आप और आएंगे आगे, राइट? सो इट इज एडिंग ऑन, पाइलिंग ऑन टू द सेम audience group. I think the latter one would work best for me क्योंकि करियर कोच, Exactly. It एज would अ work better करियर for you. कोच, एक फनल का एंट्री पॉइंट होता है जब सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हो, बट Absolutely. एक बार आपका लाइन लग गया है, यू नो योर विजन्स आर, देन you sort of get old, your content gets old for them. Right. तो आई Right. थिंक द latter one would work for me now that I'm reflecting. हाँ, तो मुझे एक और पूछना था ईशान कि डू यू थिंक कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर बहुत इंटरचेंजेबल वर्ड है कि यू सी बोथ दीज वर्ड्स वेरी ऐसे डिफरेंटली? I think influencer is what a lot of companies will call you, right? But your audience will just call you as a friend. तो वही डिफरेंस है, मतलब और तो कुछ ऐसा है नहीं. मतलब there was a reel I recently watched जिसमें बता रहे थे कि there are two words, influence and inspiring people. Influencer and inspiration are two different things. Say influence is a seen as in a negative term कि आपने कुछ थोप दिया किसी के ऊपर, आपने किसी को ब्रेन वॉश कर दिया, आपने इन्फ्लुएंस कर दिया. I didn't think of it this way. And inspiration is something that people are discovering something that was in them, and you just help them see a different picture, right? You just gave them that different perspective कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो. So that in that way you are trying to inspire them. तो इससे कोई इंटरेस्टिंग सी रील थी वो. तो what would you like to be called, influencer या content creator? I तो have always been sharing my journey कि आप क्या अलग चीज कर सकते हो लाइफ में, right? बट अगर आपको खुद को टाइटल देना होगा, इफ यू वांट टू, सॉरी टू रिस्ट्रिक्ट कि एक टाइटल दे दो, ईशान शर्मा ऑलरेडी अच्छा टाइटल है, बट अगर कुछ टाइटल देना है तो व्हाट वुड यू गिव इट टू योरसेल्फ, और व्हाट वुड यू लाइक टू बी कॉल्ड? I would just like to be called as a friend who just came, helped. वेंट अवे मत बोलना, टू I यू आर went टू away. यंग. No, I want people to learn from my content and then go away. Like that's what Gary Vee did to me. Like, Gary Vee still says that if you're still watching my content for the last 3 years, that means that Gary Vee is unsuccessful. Wow, bang on. Right? So he has himself said that I want people to watch my content, then never look back at me, but then show up to my funeral, and that's what I will do for him. Lovely. That's actually very inspiring. Right? I have not watched a single video of him in the last one and a half years.
but I was watching every single of his videos 2 years, 3 years from today, right? And that is the best thing you can do, because that means that you learn from him, and then now you're just on the executing mode. कि करना है, करना है, करना है. You're on it. Thanks. मतलब I'm quite this statement was quite. That is the thing. Like if you are watching Sandeep Maheshwari for the last 2-3 years, and आप देखे ही जा रहे हो, so in reality you're not doing any justice to yourself, just wasting your time. I think बस absorb हो रहा है but execute नहीं हो रहा है. Yeah, मतलब मोटिवेशन आप बाहर से ले रहे हो, आप चीजें सीख रहे हो, बट आप आगे कुछ काम नहीं कर रहे हो, वही वीडियो देखे जा रहे हो, तो that means that you're not growing, not executing, not implementing on what you've That's a learned. good test of your community. और अभी जैसे प्लेटफॉर्म्स भी बहुत आ रहे हैं. पहले यूट्यूबर एक था, देन अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि यूट्यूब इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं, इंस्टाग्रामर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं, अब लिंक्डइन भी हो रहा है. तो यूट्यूब पहले था आपका, राइट? Then you started Instagram and then LinkedIn. It was LinkedIn for me in the starting. Before YouTube? Yes. So I was attending this one workshop by Harish in my college, in which he was talking about how can LinkedIn help you get more opportunities in your career. And that is when I first met Harish. That is when we exchanged the numbers and we started. एक सेकंड, हरीश इज ब्लू लर्न का. Yes, Harish Uday Kumar. Okay. Curious Harish, people know him as. So that is when I started watching him, his content and everything, and then I started making content on LinkedIn. Then I was just sharing कि अच्छा मैंने ये वर्कशॉप अटेंड करी तो मुझसे ये सीखने को मिला, मैंने ये कुछ सर्टिफिकेट मिल गया कोर्स का टिपिकल स्टूडेंट वाली चीजें. तो उसके बाद फिर आगे चल के आई स्टार्टेड मेकिंग माई यूट्यूब वीडियोज, पॉडकास्ट लॉन्च किया पहले. सो आई यूज टू डू दिस अनकंफर्टेबल एक्टिविटी whenever I used to have food, dinner हो गया, फिर lunch हो गया. So most people already have a group in which they sit in, right? I said no to the group and I used to sit alongside someone who was completely random. कोई random मतलब मैं जानता ही नहीं हूँ, right? I would just sit next to him and I would just start a conversation ऐसे कि hi, how are you, what are you doing? I would just start with some conversation. I would be like अच्छा तुम podcast सुनते हो क्या? And he would always be like podcast क्या होता है? Oh, okay. An 18-year-old in 2019. हाँ, तभी Most people do not know about podcast back then. And then I asked them, do you watch YouTube? Obviously everyone does. So I thought कि मुझे podcast चलना चाहिए YouTube पे. So basically talking to random strangers gave you the idea. Yeah, but then it also made me that shameless बोल लो या फिर जो भी बोल लो, मतलब I was like कि ठीक है, I'll just go in front of anyone, I'll just be like ठीक है, I have this podcast, जाके देखो बताओ कैसा लगा. So it was all of that thing that I had, right? I need to get out of my shell. I need to get off my comfort zone and meet people and talk to them. And But I'm quite impressed. पहले ही साल में ये mindset लाना, क्या बात. क्योंकि generally what I've seen is students का भी कि placements जब आ रहे होते हैं third year, fourth year, जब actual worldly opportunities आपके step पे होती है, that's the motivation कि नहीं हमें खुद पे work करना है, ये करना है. But then for you, it was personal development throughout. It was not for a motivation कि नहीं मुझे job मिल जाएगी अच्छी, या very traditional से motivations. नहीं मतलब I had a that thing कि मुझको लेनी है एक developer की job at the end of 4 years. हाँ वो करना था, but then I realized कि यार there are better opportunities for me to look at, and that is when I started working as a freelancer. I learned to edit videos, learned to write content, design carousels, social media posts and everything. Fab skills to have. So that is how I started. So November 2022 is when I made 1 lakh in that month, right? And that is what my dream was at the end of 4 years. And I was in second year. I just started my second year, first semester. So I was like, ये तो मैंने अभी कर लिया, अब क्या करूँ? अब 1 करोड़. नहीं, तो I just realized that there is no point of keeping these benchmarks, milestones, right? कि मेरे को 1 लाख per month कमाना है या फिर मेरे को इतना कमाना है, क्योंकि because when you achieve that, what do you do then, right? So I just realized that कुछ बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं मतलब लाइफ में, अगर इतना सा काम करके I reached to this thing which was my dream. I used to think of it. I used to watch videos in which everyone was glorifying this thing. How can you get a job of 1 lakh per month as a developer in 2018-19? So what else is there? That was the question that I had in my mind. So for example, मैंने कैसे earn किया वो, तो it was basically me editing videos and making videos for a brand called Able Jobs. This is a YC-backed startup. So they basically are a portal for blue collar jobs for people. So I used to make videos on customer service का job opening है at Reliance. अगर आपको sign up करना है तो आप इस पे जा सकते हो, आप डाउनलोड करो. So I used to make like 7-8 minute type video. तो उसमें eligibility criteria क्या है, आपको क्या questions पूछे जाएंगे, आपको क्या सारी बातें जो भी रहती है उसमें. It's a very typical script. सारे सेम ही होते हैं.
and I was just changing the names कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, and I made like what 20 something videos for them, and I made like that amount. बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द मॉनेटरी बेनिफिट्स ये सारे स्किल्स डेफिनेटली आपके खुद के वीडियोस में फिर बाद में काम ये आया बहुत होगा। इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि कई बार आप डिपेंड करने लग जाओगे दूसरे लोगों पे कि अगर ये मेरी वीडियो एडिट कर देगा तो वीडियो चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3-4 दिन पहले पुट वीडियो, कोई वीडियो थी मैंने अभी डाली थी रिसेंटली, 10 टूल्स फॉर स्टूडेंट्स करके, राइट? सो दैट वीडियो आई शॉट माई सेल्फ, आई रिकॉर्डेड द बी रोल्स एज वेल, एंड देन आई एडिटेड द होल थिंग एंड आई पुट इट आउट लाइव कर दी मैंने, बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू गिव इट टू माई एडिटर, बट आई हैड दैट थिंग कि मुझे आज डालनी ही है वीडियो, तो मैं डाल के सोया फिर 9 बजे तक। सिंगल मैन आर्मी सही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब कई बार मेरे को मेरे दोस्त देखते हैं, राइट? मैं किसी को इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो आई कैरी माई होल थिंग विद मी, राइट? आज भी लाया है ईशान आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद सब कुछ करना आना चाहिए। आई थोड़ा सा बैक टू डिफर हियर because this has the other thing has worked for me, so because I have to manage a full time role and That content, is a different case. so because I have a decent, I would say, income source which is fixed. I was a Vela student. वेला तो बोलो मत खुद को, ठीक है? शुरू में वेला ही था। इतना सब तो कर रहे थे ऑलरेडी वेला। ठीक है। तो यहाँ से तो what I thought was मेरे लिए फिलहाल टाइम एक थोड़ा ज्यादा important रिसोर्स है, तो दैट्स व्हाई व्हाटएवर थिंग्स दैट आई कैन डेलीगेट वो मैं आउटसोर्स कर देती हूँ। बट आई वुड लव टू लर्न वीडियो एडिटिंग, बट इट्स जस्ट स्कैरी फॉर मी ऑनेस्टली एट द मोमेंट कि अगर मैं एडिट करने लग जाऊं तो फिर फुल टाइम रोल कंटेंट फिर सब कुछ कैसे मैनेज। नो दैट मेक्स सेंस। सो आई थिंक अ व्यूअर आपके एज और अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो कॉल ले सकते हैं कि वेदर आई हैव टू डू इट ऑल या व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर देम मे बी। या मतलब कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में like you should know basic editing. Obviously my editors are much better than me right now, but that doesn't mean that I cannot edit the video and make it live. So I learned that, and I know enough editing to make a video look decent. आई सेकेंड दैट, Right. क्योंकि अगर आप आउटसोर्स भी कर रहे हो तो यू विल हैव टू गिव देम फीडबैक्स, तो आपके फीडबैक ऐसे आपके नॉट, लिए अननोन हो जाएगा वो। हाँ, और एक्शनेबल फीडबैक देना पड़ेगा ना। मजा नहीं आ रहा है ईशान इसमें भी, हाँ। तो ईशान Feel एज नहीं आ रही, एडिटर feel फील नहीं आ नहीं रही आ रही है क्या करेंगे? यू विल हैव टू शो कि यार ये पेज ये हो गया, इसमें Right. एडिट कर दो, तो यू विल नीड टू कम्युनिकेट इन द टेक्निकलिटीज ऑफ वीडियो एडिटिंग। Right, सो आई right. सेकंड दैट। तो अभी है ना, कंटेंट पे हम तीन चीजों पे बात करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन। व्हाट इज योर फेवरेट प्लेटफॉर्म? My favorite has to be YouTube, because that is where you can build that trust and वो जो रिलेशनशिप होती है with your audience in a deeper way compared to any other platform, right? So that is very important. Like I recently went to a event which happened in GLA Mathura, right? So वहाँ पर I had a couple of my other friends as well. So both of them were Instagram creators, right? So when I went there, video मतलब पूरी event के end में people who were getting photos clicked was with the YouTube creator and not with the people who were high on Instagram or LinkedIn or other platform, because YouTube से आप किसी की वीडियो 10 मिनट बैठ के देख रहे हो वर्सेस किसी की रील आपने 1 मिनट देख ली, फॉलो कर लिया कि ठीक है, right? And that is very, you are making a conscious choice to click on that video, on that thumbnail, and then watch that video for 10 minutes. That's much different than you scrolling and randomly वो वीडियो आगे, अच्छा ठीक है, अच्छा बोला उसने, फॉलो कर लिया, आगे बढ़ो। These are two very different habits, and the one is more conscious and makes a better relationship with the person. गॉट इट। तो इस तरह से काम चलता है। दैट्स ट्रू। बट डू यू ऑल्सो थिंक ये तीनों प्लेटफॉर्म पे द टाइप ऑफ ऑडियंसेस आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट? मतलब लिंक्डइन पे अलग ऑडियंस मिलेगी आपको, मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे अलग मिलेगी। इफ यू आस्क माई ऑर्डर, आई थिंक यूट्यूब और लिंक्डइन वुड बी माई फर्स्ट टू एंड देन इंस्टाग्राम। तो समहाउ आई फील कि इंस्टाग्राम में लाइफस्टाइल और ये सही है, बट इफ यू वांट टू गिव वैल्यू, Instagram is just not worth it. That's all. पता नहीं मैं नो क्यों करता हूँ, ऑफेंस टू इंस्टाग्रामर्स। पता नहीं मैं क्यों करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता। मतलब लाइक मैंने तो अभी अनलेस, शुरू किया है यार, अभी हाँ मैंने तो अभी इंस्टाग्राम शुरू किया है। नहीं मतलब Instagram is fine, like you can see those metrics कि ठीक है लाख लोग देख रहे हैं या फिर 1 मिलियन लोगों ने देख लिया, but that doesn't mean anything. It is not comparable to a lakh views on YouTube or LinkedIn as well for that matter, ट्रू। right? So मैंने कुछ रील बनाई थी, अजीब सी कुछ थी कि अजीब सी कोई, मतलब वो वेरी वेरी सिंपल सी चीज थी। वो दिखा रहा था कि मैं 2018-19 में ऐसा दिखता था, ऐसे कुछ बोल रहा हूँ, 240p लाइव एंड देन 4K लाइव,
एंड उसमें कुछ गाना लगा दिया इमोशनल सा एंड दैट गॉट 1.4 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम, बट उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं था। अगर वो 1.4 मिलियन व्यूज मुझे एक वीडियो पे आते यूट्यूब पे, तो उससे जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती दैट इज क्रेजी। लाइक टुडे आई गॉट अ कॉल, आई गॉट अ मैसेज ईमेल फ्रॉम वॉशिंगटन पोस्ट and they want to feature me in one of their articles about chat gpt because क्या बात है। I made a chat gpt video, right? So they said that we came across this video of yours on YouTube and we would want you to comment on this, something like that उन्होंने बताया मेरे को। So that happened because उन्होंने मेरी वीडियो देखी and I was there on that platform। मेरे को वीडियो आई, उन्होंने chat gpt सर्च किया तो मेरी वीडियो ऊपर आई। Now compare that with something like Instagram, which doesn't have a searchable thing. अगर आप ChatGPT search करो तो क्या आएगा, अजीब सा लगेगा, right? It is a very different way to, difficult to find a creator who has that expertise over something or the other. So I think in that sense, YouTube is always the best way to go. आई थिंक, और अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन से कोई बिजनेस डेवलप करना चाहते हो तो लिंक्डइन वुड बी अ गुड वे टू LinkedIn is a great way to लीड get ट्रैक्शन। traction. LinkedIn is very simple and easy to grow on, according to my roommate as well, Sarang, who is my co-founder right now. So, for example, he just made a simple post about why he is not studying in placements because he'll be working full time at marketer. And वो पोस्ट उसका बहुत चल गया, 3,000 लाइक आ गए एकदम से। तो यूज लाइक ब्रो मैंने तो कुछ इंटरेस्टिंग किया ही नहीं, मैंने सिंपल सा एक पोस्ट डाला एंड एकदम से आई गॉट दिस 1 लाख impressions on this post। मतलब that is the best part about LinkedIn, right? Because there are so few people making content on that platform. You making that post can get you that type of traction. It won't last forever. So I think it's a great opportunity for you to share your life lessons, जो भी जर्नी चल रही है, जो भी कर रहे हो, राइट। with people on LinkedIn and build that following over there. आई थिंक आई वेरी रिसेंटली सीन कि मैंने 1 मंथ पहले लिंक्डइन भी शुरू किया एंड देन लीड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत सिंपल है, just basically put a picture of yours, study abroad में put a picture, पीछे लंदन MIT, Harvard, यस। and then you write like a interesting सा hook, and there you have it. दे दो यार हमें ऐसे कोई स्टेप्स या फ्रेमवर्क है कि किसी को अगर कंटेंट बनाना शुरू करना है और उसमें इंस्पिरेशन है, नीश है, बट सक्सेसफुल होना है। I think you just need to decide. First of all, आप पहले 100 वीडियोस बनाओ without even thinking of success, without even thinking कि कब आएंगे व्यूज, मेरे को कोई व्यूज क्यों नहीं आ रहे या फिर ब्रांड डील भी नहीं आ रही, राइट? यू फर्स्ट मेक 100 वीडियोस एंड देन यू असेस कि आपकी ऑडियंस क्या बोल रही है। उससे पहले यू क्रिएट लाइक अ वेन डायग्राम, जो होता है ना सर्कल्स बनाते हैं 4। सो यू मेक दैट डायग्राम ऑफ फर्स्ट डायग्राम ऑफ व्हाट यू आर गुड एट, देन वन मोर डायग्राम ऑफ व्हाट योर ऑडियंस वुड वांट टू सी। कौन सी ऑडियंस आपको कैटर करना है पहले वो डिसाइड करिए आप। एंड देन यू डिसाइड कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है पॉपुलर, व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, राइट? And then एक ये भी strategy, blue ocean strategy that you might be aware of, right? So you basically analyze all the videos in your industry, in your field on YouTube, and then you give them a point out of 10 in various fields. For example, humor में ये creator कहाँ पर lie कर रहे हैं, right? There are some creators who are very humorous when they're talking about politics या फिर something or the other. There are some creators who are very serious when they're talking about their topic. So where do they lie, right? Humor एक हो गया. How many stock footages do they use, right? Like what is like that? How clicky are their thumbnails? How good is their ability to make a story appealing? स्टोरी टेलिंग कैसी है उनकी, उस पर रेट करो उनको। यू क्रिएट दैट रेटिंग, यू मेक मल्टीपल ऑफ दोस पैरामीटर्स, 20-30 बनाओ, एंड देन यू सी कि what is it that you can provide जो कि सब लोग नहीं कर पा रहे। यू फाइंड दैट थिंग, जैसे ठीक है कोई भी ऐसा नहीं है जो ह्यूमर यूज कर रहा है और इसके थंबनेल ऐसे हों और ये ऐसी चीजें कर रहा हो। बेसिकली एक यूएसपी खुद के लिए एस्टैब्लिश। हाँ, सो यू स्टैक दोस थिंग्स कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, और ये सारी चीजें कोई भी नहीं कर रहा इस फील्ड में, राइट? सो यू ट्राई टू डू दैट। That's step number 1. That is will give you clarity कि मुझे करना क्या है, and audience को किस तरह की value मैं दे सकता हूँ, which will be different from everyone else, because that is when you will see that crazy growth, hockey stick growth जो होती है, right? When you will find that part that you can do that no one else can deliver on. So that is important, and then just make 100 videos and take feedback from people. ठीक है, तो फिर एस्टैब्लिश कर लिया एक यूएसपी, देन फिर नेक्स्ट स्टेप जस्ट गो ऑन Just make कंसिस्टेंटली। content. लोगों से पूछो, make a promise to yourself and stay true to that. जैसे I made a promise in 2020 to myself कि मैं हर 2 दिन में एक वीडियो डालूंगा, कुछ भी हो जाए मैं एक वीडियो डालूंगा 2 दिन में, and there are 1,000 videos now on the channel.
तो वही चीज है, मतलब दैट इज व्हाट यू नीड एट द एंड, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन. So apart from content, podcasts, collaborations, brands, what do you do? I know gymming. Insta पे रोज एक story तो होती है. Apart from gymming, what are you looking into? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्पिरेशन लेते रहो हर चीज से, Hmm. राइट. जैसे wherever you go to a place, whenever you go to listen a new audiobook, या फिर I was watching that हाँ. documentary, Hmm. right, तो उससे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. So I was also watching this thing called as How to Become a Tyrant. Hmm. So this was on Netflix. It's a very interesting documentary. Peter Dinklage, so he narrates everything. So he was talking about how do these rulers, right, people like Gaddafi, Mussolini, and Hitler, how do they seize power? How do they get control of people's minds? And that's a very good lesson to learn for anyone who's trying to, create a following. What do you really do in a healthy way? Not going into that the way that they went, but you need to know what did they do and what can you replicate from them. That is very important. एक example से समझो. अब जैसे what people do is the best thing you can do to create a cult as a creator is to not talk about what you offer, but talk about the things that others do not offer, or the problem, the mistakes that others have. So you are creating a us versus them mentality, right? तो उससे क्या होता है, there's a diversion created, right? I know a creator who did that with me, right? So there is that thing created. Now उसकी audience बहुत कट्टर है उसके against, उसके against कुछ सुन नहीं सकती, right? So that's just how it is with him, and that helped him to build that audience. तो जो भी ऑडियंस है दैट इज वेरी लॉयल, की नहीं तो बहुत बढ़िया बात कर दी इन्होंने. आई थिंक दैट पीपल आर लूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ दैट. वी सी दीस थिंग्स हैपनिंग, दैट अंधभक्ति एंड भैया वाला कल्चर, क्या है भैया हमारे भैया एंड ऑल दैट. द भैया डजंट केयर अबाउट यू, ही केयर्स अबाउट द व्यूज एंड ऑल. So that is a very important thing to focus on. जैसे I met this one guy who used to rent out supercars. So he had a Rolls Royce right next to him. तो मैंने बताया उसको मेरे बारे में, तो उसने क्या हुआ, बैठो आराम से फोटो वोटो खींचो. तो फोटो वोटो खींच ली मैंने, but then I learned this thing that he doesn't own the cars. He knows a lot of rich people in Dubai, and those rich people give these cars to them so that he can rent it out to other people. And he just takes a cut and he's able to, start a business like that, just to show the importance of networking and everything. So अभी से क्या है, like what are you looking forward to next? Abhi I'm looking forward to the tool that I'm releasing. AI tool that is a very interesting project I'm working in the last two months with some developers. So that will be coming soon, using ChatGPT to help people learn better. And I am also working to create new type of content, right? So more podcasts with people and like giving it like a proper name. Say I have been doing podcasts for the last 2 years, but मैंने ऐसे नाम नहीं दिया उसको कि this is the Ishan Sharma show. हाँ, branding और important है मुझे right, लगता है. yeah, so I need to do that. तो मैं वो करूँगा कि proper एक स्टूडियो लगाएंगे. अभी 2 महीने में मेरा co-founder graduate हो रहा है कॉलेज से, which means that he can finally come with me and I'll be shifting to a different place. So we are debating कि we should either go to Bangalore or stay in Delhi, right? मुंबई ऑप्शन नहीं है. मुंबई बहुत है, मुंबई. मैं क्या टेंशन अरे है आपको? मुंबई घर जाएंगा उसमें. घर चला जाएगा. चला जाएगा. तो इसीलिए वी आर डिबेटिंग कि शुड बी लिव इन गुड़गांव, शुड बी लिव इन बैंगलोर. तो ऐसा सोचा है, अभी देखते हैं. बुक भी पब्लिश होने ओ वाली या है ना. बुक इज कमिंग एज वेल. मैं भूल जाता हूँ, इतनी अच्छी चलती रहती है. इतनी चलते रहते हैं, क्या क्या बताऊं मयूरी, मैं यूनिकॉर्न इतना कुछ सीक्रेट. करता हूँ. yes the book is coming out in August, 15th of August. So in that we have interviewed 20 unicorn founders, so that is coming. Yeah. बढ़िया यार, sounds very exciting. Thank you so much. 15th August. I'm looking forward to that book, क्योंकि जिस भी फाउंडर से तुम मिले हो, सबकी काफी यूनिक स्टोरी है और सारी स्टोरीज काफी स्कैटर्ड है थ्रू आउट इंटरनेट. If it's getting together in one book, in one resource, I think it'd be very good. Yes. And a very interesting figure is writing a foreword for it as well. I'll tell you about it after this video is over. आपको लेट पता चलेगा, मुझे पता चल जाएगा. Thank you यार so much. ईशान, एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं. कुछ तो ऐसे मोटिवेशनल इंस्पायरिंग बोल दो कि जिसको ये करियर परस्यू करना है, चाहे पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, पेरेंट्स को कुछ बोलना है वो बोलो, या व्यूअर्स को कुछ बोलना है, व्हाटएवर यू वांट टू से. पेरेंट्स समझ जाएंगे when they will see you working. डेडिकेशन जो वो देखेंगे जब, तो they will realize कि ठीक है ये बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा, इतना डेडिकेशन है. So you don't need to worry about them.
एक दो साल में व्हेन दे विल सी यू के बंदा हर दिन काम कर, अंडरस्टैंड कि ठीक है कुछ मोच कर लेगा. मोटिवेशन इफ यू नीड फॉर कंटेंट क्रिएशन देन यू शुड प्रॉब्ली नॉट बी डूइंग कंटेंट क्रिएशन, गुड and that वन. is a very important thing. So I think motivation mat lo, and just pick up the camera and speak your heart out. परफेक्ट. चलो, थैंक यू ईशान. Thank you so much. मिलते हैं अगली बार. Bye bye.